Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed exercise 13.3, you can see, which was based on right circular cone. Right, now we are going to move ahead from that. That means we are going to discuss a new topic which is going to help us to solve the question based on exercise 13.4. Now the topic which we are going to discuss in this video is, you can see, surface area of sphere. Right, so यहाँ पे surface area of sphere जो है हम कैलकुलेट करेंगे, बट उससे पहले sphere जो एक फिगर है वो एक्चुअल में क्या है वो हम समझते हैं. राइट, सो लेट मी जस्ट रीड दिस. यहाँ पे sphere क्या होता है, इज अ 3-dimensional figure. सो sphere क्या है, एक 3-dimensional figure है. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू कि ये 3-dimensional figure sphere एक्चुअल में होता कैसा है. इट इज एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम अ सर्कल. सो ये किससे मिलके बना था, एक सर्कल से मिलके बना था. इफ आई जस्ट ड्रॉ अ सर्कल हियर, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट इन अ बेटर वे लाइक दिस. राइट, नाउ वी नो दैट दिस इज अ सर्कल. अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट मी जस्ट ड्रॉ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. राइट, सो ये क्या है, इस सर्कल का सेंटर. अब लेट मी जस्ट ऑल्सो ड्रॉ द डायामीटर. राइट, सो हमें पता है डायामीटर जो होता है सर्कल का सेंटर में से पास आउट होता है. राइट, सो दिस विल बी द डायामीटर ऑफ दिस सर्कल. अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये सर्कल मुझे पता है एक प्लेन फिगर होता है. राइट, इट इज जस्ट अ 2-dimensional फिगर विच वी कैन जस्ट सी. राइट, सो यहाँ पे ये 2-dimensional फिगर है, एक सर्कल जिसका मैंने डायामीटर ड्रॉ किया विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, वी नो. राइट, अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले ली एंड पेस्टेड इट अलोंग द डायामीटर. राइट, सो मुझे पता है कि जैसा कि इससे पहले हमने कौन जनरेट किया था, इफ यू रिमेंबर, तो हमने क्या लिया था, एक ट्राइंगल लिया था. इफ आई जस्ट ड्रॉ इट राइट हियर, इफ यू जस्ट रिमेंबर, वी हैव टेकन अ राइट ट्राइंगल एंड देन आई हैव प्लेस्ड अ स्ट्रिंग अलोंग इट्स परपेंडिकुलर साइड. राइट, तो उसके बाद मैंने क्या किया था, इसको रोटेट किया था आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, व्हाटएवर यू लाइक. सो उससे रोटेट करने पे आपको पता है यहाँ पे किस तरह का फिगर जनरेट हुआ था, इट was cone. Right, so इस तरह से एक फिगर जनरेट हुआ था with a circular base which we called a right circular cone. Now similarly हम यहाँ पे इस sphere को बनाने के लिए क्या लिया, एक सर्कल लिया, then एक string place की along its diameter. Right, then मैंने क्या किया, अब इसको again rotate करूंगा either anti clockwise or clockwise, whatever you like. Right, then आप देख सकते हैं ये एक प्लेन फिगर था. जब मैं इसको रोटेट करूंगा, सो इट विल नाउ रोटेट इन ऑल द डायमेंशंस. राइट, सो ये रोटेट करने पे जो ये फिगर बनेगा, इट विल बी द स्फीयर. दिस इज व्हाट वी कॉल अ स्फीयर. सो अ स्फीयर एग्जैक्टली लुक्स लाइक फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन एज अ सर्कल. राइट, सो आपने एक बॉल देखी होगी, लाइक यू कैन सी बॉल विच हैज सम स्पेस विद इन. राइट, सो यू कैन सी एक स्फीयर क्या होता है, जो एक सर्कल से ही बना है. व्हेन वी रोटेट द सर्कल by placing a string across its diameter. Right, then when we rotate it, you can see you will get a figure which looks like something, you can say a ball, right, which is known as sphere. तो अब ये क्या है, अब आप देखेंगे what happens to the center of this circle. So ये center का क्या होगा, let me just tell you, ये center जो है अब किसका काम करेगा, sphere के center का काम करेगा. Right, so now you can see this is what actually a sphere looks like. So it is like a ball, you can say. Right, you have seen it has got some space within. So this is what we call a sphere. It is a solid figure, you can see a 3-dimensional solid figure. Now you can rotate it and have a view from all the sides. Right, अब यानी कि हमें पता है which is made up of all points in the space, यानी कि इसके बीच में बहुत सारे स्पेस में पॉइंट्स हैं. So it is made up of all the points within space. Right, now you can see which lies at a constant distance called the radius. Now अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे इसके सरफेस के ऊपर, अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स लूंगा, जैसा कि यहाँ पे सर्कल के केस में होता है कि जितने भी पॉइंट्स जो है वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे होते हैं, उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है, सेम, विच इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल. राइट, सो सिमिलर थिंग एग्जिस्ट विद, यू कैन से, स्फीयर. तो स्फीयर की सर्फेस पे जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, सभी का सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, सेम, विच इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. राइट, so it is exactly the same condition which actually happens with a circle. Right, so now let us move on further.
Now what we are going to see here, a special thing, that a sphere is like the surface of the bowl. As I have told you, तो sphere क्या है? Is just like the surface of the bowl. So बाहर का जो surface होता है एक bowl का, that is what we call actually a sphere. Now the word solid sphere is used for the solid whose surface is a sphere. So हम solid sphere क्या होता है? जिसके अंदर भी क्या है? Metal filled है, right? There is no space within, right? So वो क्या होगा? एक solid sphere कहलाएगा. You can see it is used for a solid whose surface is sphere. So एक solid bowl मान लीजिए जिसके अंदर space नहीं है, metal filled है, तो then उसका surface क्या है? It's still a sphere. So उसको क्या बोलेंगे हम? A solid sphere, right? So this is what we call a sphere. Now we are going to see how to exactly calculate the surface area of a sphere. But before that, let me just make some space. So students, now let us move further and see the formula to calculate the total surface area of a sphere, right? So you can see here, let me just take a sphere and put a nail inside it from upside, right? So यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक nail को इसके अंदर डाल रहा हूँ from the top, right? Then let me just now, you can see, take a string, or you can see the string. So यहाँ पे मैंने एक string ली और इसके ऊपर ऐसे revolve करना start किया, right? So you can see सबसे पहले मैंने क्या किया, एक rubber ball ली and उसके ऊपर एक nail जो है implant कर दिया, drive a nail into it. So इसके ऊपर एक कील जो होता है हमारे पास, वो इसके ऊपर you can see अंदर डाल दिया ऊपर से टॉप से, right? Then taking support of the nail, let us wind a string around the ball. So यहाँ पे मैंने इसका support लेते हुए एक you can see वायर बोल लीजिए या फिर एक स्ट्रिंग बोल लीजिए. सो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग को ऐसे रोटेट करता गया इसके ऊपर. यू कैन सी व्हेन यू रीच द फुलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉल. सो जब हम इसको कंप्लीटली पूरा जो है इसके ऊपर फुलेस्ट पार्ट पे आ जाएंगे. फुलेस्ट पार्ट कहाँ होगा? जो इसका सेंटर होगा. सो व्हेन वी रिवॉल्व द स्ट्रिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, देन यू कैन सी यूज पिन्स टू कीप द स्ट्रिंग इन प्लेस. तो यहाँ पे हमें इसके ऊपर पिन्स लगानी पड़ेंगी ताकि ये जो स्ट्रिंग हमने लगाई है ये उसी प्लेस पे रहे, ठीक है, यानी मूव ना करे इधर उधर, राइट? देन यू कैन सी कंटिन्यू टू वाइंड द स्ट्रिंग अराउंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉल. सो इसी तरह से हम पूरी बॉल को एक स्ट्रिंग से रिवॉल्व कर देंगे राउंड, राइट? देन व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट सिंपली दोबारा उसको रैप आउट करेंगे, यानी खोलेंगे उस स्ट्रिंग को. और यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं 4 सर्कल्स लिए, राइट? अब मैं वो जो स्ट्रिंग एग्जैक्टली जितनी लेंथ की थी मैंने मेजर कर ली, टॉप से लेके जहां पे फिनिशिंग एंड है वहां तक की स्ट्रिंग की लेंथ ले ली. एंड आई एम जस्ट सिंपली प्लेसिंग दैट स्ट्रिंग इन दीज 4 सर्कल्स. सो आपको क्या पता चलेगा इससे कि जो आपकी स्ट्रिंग की टोटल लेंथ थी जो आपने इस स्फीयर के ऊपर रिवॉल्व की थी वो 4 सर्कल्स में कंप्लीट होगी अगर मैं इस तरह से उसको प्लेस कर दूंगा. सो दिस शोज कि ये जो स्फीयर है इसका सरफेस एरिया जो होगा, लेट मी जस्ट टेल यू कि ये स्फीयर के अंदर क्या होता है, या तो सॉलिड स्फीयर हो सकता है या फिर यू कैन से होलो स्फीयर भी हो सकता है, वट एवर इट इज. लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ सरफेस के ऊपर की बात करनी है. सो हमें पता है कि बाहर वाला एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया. सो हियर यू कैन सी व्हेन वी टॉक अबाउट द सरफेस एरिया, इट इज एक्चुअली द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, राइट? हम इसको क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया बोलते हैं, राइट? सो लेट मी जस्ट टेल यू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज एग्जैक्टली, यू कैन सी अगर मैं एक सर्कल की बात करता हूं तो मुझे पता है एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. सो यहाँ पे कितने सर्कल्स हैं? यू कैन सी 1 2 3 एंड 4. आप देख सकते हैं जो स्ट्रिंग मैंने इस स्फीयर के ऊपर रिवॉल्व करके रैप की थी, जब मैं उसको वापस खोलूंगा और प्लेस करूंगा तो यहाँ पे 4 सर्कल्स में जाकर वो कंप्लीट होगी, राइट? सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सरफेस एरिया है जो इस स्फीयर का होगा वो एक्चुअली में 4 सर्कल के एरिया के बराबर होगा, राइट? सो 4 टाइम्स the area of a circle, that is pi r square. So that will be 4 pi r square, right? So this is going to be the formula here of the surface area of sphere, that is 4 pi r square. Radius आपको पता है सेंटर से डिस्टेंस जो कि सरफेस के ऊपर पॉइंट्स होंगे, you can see numerous values, right? So यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे सरफेस के ऊपर, उनका सभी पॉइंट्स का जो सेंटर से डिस्टेंस होगा that is known as the radius of the sphere. So you can see this is how we can calculate the surface area of a sphere, right? That is by the formula 4 pi r square.
So that was all about the surface area of a sphere. So students, let's move further and talk about now a hemisphere. So what is actually a hemisphere? Let me just tell you. Now in this topic we are going to discuss the surface area of a hemisphere. Now you can see hemisphere जो है वो actually में एक sphere से ही बना है. Let me just tell you how. So यहाँ पे अगर मैं एक sphere ले लेता हूँ like this. So अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? From the middle I am just dividing it. I am just, you can see, cutting it from the middle, right? So यहाँ पे मैंने इस sphere को middle से cut कर दिया. So what we will get here is, you can see if I just draw. So one is the upper part like this, and the other one is the lower part. Now both you can see will be like this, right? So यहाँ पे आपके पास दो parts में break हो गया, 1 and 2. Now अगर आप दोनों को देखें तो ये स्ट्रक्चर कौन सी है? ये आधा स्फीयर है, हाफ. सो यू कैन सी हाफ का मतलब क्या होता है? हेमी. एंड यू कैन सी इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेमीस्फीयर, यानी हाफ स्फीयर, राइट? नाउ लेट मी जस्ट रीड दिस. सो हाउ मेनी फेसेस डू यू सी इन द सर्फेस ऑफ अ स्फीयर? सो अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो हमारे पास सिर्फ एक ही सरफेस था टोटल, ये कंप्लीट, जो कि कर्व्ड था, राइट? मैंने आपको बताया जो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर है वो एक्चुअल में क्या है? जो कर्व्ड सरफेस है उसका, दैट इज द वन, राइट? सो यहाँ पे एक स्फीयर के अंदर क्या होता है? सिर्फ कर्व्ड सरफेस होता है, तो एक ही होता है, राइट? नाउ लेट मी जस्ट मूव फर्दर. नाउ लेट अस टेक अ सॉलिड स्फीयर एंड स्लाइस इट एग्जैक्टली थ्रू द मिडल. जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने मिडल से ब्रेक किया. सो वी हैव गॉट टू हेमीस्फीयर्स, राइट? सो यहाँ पे दो हेमीस्फीयर आ गया हमारे पास. नाउ हमने यहाँ पे जो कट किया था इसको विद द हेल्प ऑफ अ प्लेन. सो यहाँ पे एक प्लेन की हेल्प से, यू कैन सी शीट टाइप ऑफ थिंग विच इज, you can see a plane. So यहाँ पे मैंने कट किया from the middle through its center. Now it gets divided into two equal parts. So ये क्या हो सकता है? स्फीयर क्या हो गया? दो equal parts में डिवाइड हो गया. Now each half is known as hemisphere. So यहाँ तक मैंने आपको बता दिया. Now let us move further. Now hemisphere have two faces. तो जैसा कि मैंने बताया, स्फीयर में तो सिर्फ एक ही फेस है, which is actually the curved face. The curved face, which is also known as the curved surface, right? So there's only one face which is curved, but in hemisphere we have got two faces. अगर मैं इस एक हेमिस्फीयर की बात करता हूं, so एक तो इसका ये curved part है, right? If I just write it here, so ये क्या है? Curved surface, and the other, एक तो ये फेस हो गया, और दूसरा फेस क्या है? ये जो बेस है सर्कुलर. So this base is the second face. So यहाँ पे दो फेस होते हैं एक हेमिस्फीयर के अंदर. एक तो होता है जो कर्व्ड सरफेस होता है, और एक क्या है? सर्कुलर बेस, राइट? So one is curved face and other one is a flat face, which is known as the base. So एकदम flat होता है circle, so that is the flat base. You can write it better. So that will be a flat base, right? So here we have got two, you can see, faces of a hemisphere. One is the curved and the other one is a flat base, which is circular in structure, right? So there are two faces of, you can see, a hemisphere. So यहाँ पे formula भी two होंगे, right? So एक तो फॉर्मूला होगा इसका कर्व्ड सरफेस के लिए. So what is the curved surface area of a hemisphere, right? So let us find out that. So if I just rub this, now talking about, you can see the curved surface area of hemisphere, right? So जैसा कि आपको पता है कि ये कंप्लीट एक स्फीयर था. ये हेमिस्फीयर क्या है? इसका ईच हाफ, यानी दो पार्ट्स हैं, यानी कि स्फीयर का क्या है? हाफ है, राइट? सो हेमिस्फीयर, स्फीयर का क्या है? हाफ पार्ट है. सो मैं जो सरफेस एरिया किसका था? स्फीयर का था, उसका हाफ कर दूंगा, तो किसका सरफेस एरिया आएगा? ऑफ अ हेमिस्फीयर. नाउ रिमेंबर कि ये जो सरफेस एरिया एक्चुअल में क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया, और हम यहाँ पे इस हेमिस्फीयर का भी क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया. तो जो स्फीयर का सरफेस एरिया है उसका हाफ क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट? सो दैट विल बी, हमें पता है कि स्फीयर का सरफेस एरिया क्या था? दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. सो इसका हाफ क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और यू कैन आल्सो से सरफेस एरिया, राइट? सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. सो दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर. सो यहाँ पे हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ गया, व्हिच इज कैलकुलेटेड बाय, यू कैन सी इफ आई जस्ट राइट हियर, सो द कर्व्ड surface area of hemisphere, right? So that is 2 pi r square, right? So this is the formula to calculate the curved surface area of hemisphere. अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे दो फेसेस होते हैं, तो कर्व्ड सरफेस का तो फॉर्मूला हो गया, राइट?
Now what about this flat base? So अगर मैं इन दोनों का together बात करूं, you can see the curved surface area as well as the flat base together will be the total surface area of hemisphere. So यहाँ पे एक और formula है, that is of the, you can say, total surface area of a hemisphere, right? Because it has got two faces. तो यहाँ पे sphere के लिए सिर्फ एक ही formula था, you can see here, and that is 4 pi r square, which is the surface area of sphere. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही face है, which is the curved face, right? But hemisphere में दो face है, so एक तो curved surface area होगा और together दोनों face जो है, एक तो you can see curved surface and the flat base together क्या होगा? Total surface area. So there is another formula for hemisphere, that is the total surface area of hemisphere, right? So आपको पता है यहाँ पे total surface area क्या होगा? Curved surface area plus में area of flat base, जो कि क्या है? Circular है, right? Let me just write it clear. So circular, right? So हमें पता है कि curved surface area हम calculate कर चुके हैं, that is you can say 2 pi r square plus में flat base, अब हमें पता है circular base है, so circle का area क्या होता है? Simply pi r square, right? So यहाँ पे curved surface area कितना था? 2 pi r square और ये pi r square. So दोनों को add कर देता हूँ, 2 pi r square plus 1 pi r square. So together it will be 3 pi r square. So this is going to be the formula of total surface area of a hemisphere, that is 3 pi r square. That means the curved surface area plus में area of flat base together will be the total surface area. So here we have got another formula, that is the total surface area of hemisphere, right? So which is, you can see, 3 pi r square. So these three formulas are important, which will be helping us to solve the question in exercise 13.4. So you have to just learn them, understand them, how they are formed. So this is all you can see that I've talked about. You can see the surface area of a sphere, then the surface area of a hemisphere. So that was all in this topic here. So students, as we have now seen the surface area of a sphere and a hemisphere, now let us see how to actually apply the formulas to calculate the same, right? So यहाँ पे we are going to take the example part here so that we can see how to actually apply these formulas to calculate the respective surface area, right? So let us see the first example, which is actually example number 7 in your book. So it says that find the surface area of sphere of radius 7 centimeter, right? So if I just first draw a rough sphere here, so यहाँ पे एक मैं sphere बना लेता हूँ roughly, and we are given the you can see the radius of this sphere, right? So यहाँ पे radius जो है that is given to us, so that is 7 centimeter, right? So let me just start the solution of this with the given thing. So यहाँ पे आपको क्या given है? The radius, right? So if I just write it like this, so radius is represented by r, that is 7 centimeter. अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है? Simply the surface area of the sphere, and we know there is only one surface area of a sphere, which is the curved one, right? And that can be calculated by the formula 4 pi r square, right? So let me just apply the formula. Now you can see the curved, sorry, not the curved, you can write it as the surface area, that will be better, right? So the surface area of sphere is 4 pi r square. Actually the surface area is the curved one, but we write it as the surface area, right? So यहाँ पे आपको पता है 4 as it is into pi is 22 upon 7 into r square. So r की value हमें पता है that is 7, so that will be 7 square, right? So that will be 4 into 22 upon 7. Now 7 का square 7 into 7, 2 times लिख लिया मैंने, right? So एक 7 से एक 7 cancel out. Now 4 into 22, let me just do that. So 22 into 4, that will be 88. Now 88 into 7, right? So let me just check out. So 8 7 ja 56, 5 carry, then 7 8 ja 56 and 5. So that will be 61. So that will be 616. Now you can see the radius was given in centimeters, so the area will be in centimeters square, right? So this is going to be the surface area 616 centimeter square of this sphere having the radius 7 centimeter, right? So you have seen how simply you have to just apply the formula to calculate the surface area of a sphere. Quite easy. So that was all you can see in the first example here. So students, now let us take the next example here and see how to actually find out
the curved surface area and the total surface area of a hemisphere, right? So this example is based on the same. So we have to find the curved surface area in the first part, and in the second part we have to find out the total surface area of a hemisphere of radius 21 centimeter, right? So यहाँ पे हमें एक hemisphere given है जिसकी radius given है, that is 21 centimeter. So first let me just draw a sphere and then divide it in two. We know that then we will get, you can see a hemisphere. So here you can see a hemisphere is something that looks like this. I have told you, right? So this you can see is the center of the flat base, and let me just connect it with the outer curved area. So this will be the radius here of this hemisphere, right? So this is the figure, and the radius is given to us as, you can see, 21 centimeter, right? So this is the radius given to us. So let me just start off the solution here. So the radius of this hemisphere, that is given to us as 21 centimeter, right? Now in the first part you can see we have to find out the curved surface area of this hemisphere, right? So we know the formula of curved surface area of hemisphere, that is 2 pi r square, right? So let me just apply on. So the curved surface area of hemisphere is 2 pi r square, right? So यहाँ पे 2 as it is, now into 2 pi की value कितनी थी 22/7. Radius is known to us, that is 21 square, right? So further if I just write down, so 21 square means 21 into 21, right? So if I just solve this, so 7 1 is 7, 7 3 ja 21, right? So now we have to simply multiply this. So 2 into 22, that is 44. Then 44 into 3, let me just check out. So 44 into 3, that will be 3 4 is 12, 1 carry, 3 4 is 12 plus 1, 13, right? So you can see 2 22 is 44, 44 into 3, that is 132, 132 into 21, right? So if I just multiply further, so 1 into 132, that will be 132, then 2 2 is 4, 2 3 is 6, and 2 1 is 2. So that will be, you can see 2772. So that will be 2772 centimeters square. So this is going to be, you can see the curved surface area, this part, right, of, you can say, this hemisphere, right? Then that is what we have to calculate in the first part. Now let us move on to the next. So यहाँ पे second part में हमें क्या calculate करना है? Total surface area of this hemisphere. अब मुझे पता है total surface area किसका combination होता है? Curved surface area ये वाला plus ये flat base, right? So this flat base plus this curved surface area, that will be together total surface area, and we know the formula, that is 3 pi r square, right? So let us simply apply on this formula here to calculate the total surface area of this hemisphere, right? So in the second part you can see the total surface area of hemisphere is 3 pi r square, right? So let me just substitute the values here. So 3 into pi, pi is 22/7 into radius. Now we know the radius, that is 21 square. So I'm just writing it twice here. R square means 21 into 21, right? You can see here. So we have to write it twice. So यहाँ पे 7 1 is 7, 7 3 ja 21, right? So now 3 into 22, that will be 66. 66 into 3, let me just check out. So 66 into 3. So 3 6 is 18, 1 carry, 3 6 is 18 and 1 19, right? So now 198 into 21. So let me just do it here. So 198 into 21. So 1 into 198 will be 198. Then 2 8 is 16. 1 carry, 2 9 is 18 plus 1 19. 1 carry, 2 1 is 2 and 1 3. So that will be 8. 9 and 6 is 15. So 9 10 11. So 1 carry. So 4158, right? 4158 centimeters square. This will be the total surface area, you can see, of this hemisphere, right? And this is what we have to do in this question. So that was all in this example here. So students, now let us take next example here. So this time example number 9th, which is in the book, is given as, you can see, the hollow sphere in which the circus motorcyclist performs his stunts has a diameter of 7 meters, right? So यहाँ पे हमें एक hollow sphere given है. Now a hollow sphere is which is empty from inside. There is a free space, right? So you can see if I just draw a sphere here. Now you can see this is a sphere which is having the free space from inside. It is a hollow sphere, right? Now you can see in which the circus motorcyclist performs his stunts.
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरिया के ऊपर जो एक सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट है जो अपने स्टंट्स को परफॉर्म करता है इनसाइड, राइट? नाउ यू कैन सी दिस इज द ओल एरिया इन विच ही कैन परफॉर्म, राइट? नाउ इट हैज अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर. सो हमें यहाँ पे इस स्फीयर का डायमीटर गिवन है, you can see that as 7 meters, right? So this is the diameter given to us. You can see find the area available to the motorcyclist for riding. So हमें ये जो area जो motorcyclist को available है to perform his stunts वो निकालना है. So we know that a sphere has only one surface area, or you can say one face, which is the curved one, right? And we know the formula to calculate the surface area of a sphere, that is calculated by 4 pi r square, right? So this curved surface area is the area which is available to the rider, the motorcyclist, to perform his stunts, and this area is known as surface area of a sphere, and that is has got the formula 4 pi r square. So let me first write in the solution the thing that I have got, the diameter, right? So the diameter is given to us as 7 meters. Now we know we can calculate the radius simply by halving it, right? So इसको half कर देता हूँ. So 7 by 2 that will be 3.5 meters, right? So 7 का half कितना होगा? 3.5. Now this is going to be the radius here. So if I just write it down here, so 3.5 will be simply the radius of this sphere, right? Now let me just simply apply the formula of surface area of sphere, right? So that will be 4 pi r square. So we have to simply substitute the value. So 4 into pi is 22 upon 7 into radius square means I'm going to multiply it twice, 2 times, right? So now you can see decimal removed, that will be 10. Decimal removed, that will be 10, because decimal के बाद एक ही digit है, right? So यहाँ पे decimal को मैं remove कर देता हूँ. Now 7 1 is 7, 7 5 is 35, right? Now leave the zeros in the denominator as it is, because that will make the calculation easier, right? So 10 into 10, that will be 100, right? Now simply multiply the numerator values. So 4 into 22, that will be 88. 88 into 5, let me just check out 88 into 5. So that will be 5 8 is 40, 0 4 carry, 5 8 is 40 plus 4, 44, right? So यहाँ पे बस कितना आ गया? यहाँ पे 4 into 2, 22, 88. 88 into 5, that is 440. Now 440 into 35, right? So that will be, you can see 5 0 0, 5 4 is 20, 2 carry, 5 4 is 20 plus 2, 22, right? Then 3 0 0, 3 4 is 12, 1 carry, then 3 4 is 12 plus 1, 13, right? So यहाँ पे plus adding them, you can see if I just cross check, so 3 4 is 12, 1 carry, 3 4 is 12 plus 1, 13, right? So 2 is 4, and you can see 2 and 3 5 and 1 4, right? So that will be 1 5 4 00. So you can see 2 zeros will be cancelled out. So the area will be 154. Now you can see it is in meter. So meter square, right? So this is going to be the surface area available to the motorcyclist to perform his stunts in this sphere, right? And that is what we have to calculate in this. So that was all in this example here. So students, now let us move on to the last example here. Then further in the next video we are going to move on to the exercise. So let us see the last example here. So the example is example number 10, which is a hemispherical dome of a building needs to be painted, right? So यहाँ पे एक hemispherical dome है एक building का, right? आपने देखा होगा like a Taj Mahal. So you can see the top is like a hemispherical dome, right? So you can see something like this. So आप देख सकते हैं ये मैंने एक hemispherical dome बनाया. So now you can see it is needs to be painted. So यहाँ पे इसको क्या करना है? Paint करना है. Now if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter. So आप देख सकते हैं ये जो इसका base होगा that is circular from inside. अब यहाँ पे हमें circumference given है इसके base की. Now हमें पता है कि base जो है वो कौन सी form में है? सर्कल, राइट? और सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, राइट? इसी से कैलकुलेट करते हैं ना. ये सर्कमफ्रेंस हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज यू कैन सी 17.6 मीटर्स, राइट? सो सबसे पहले मैं राइट करता हूं जो मुझे गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन हियर. सो द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस is 17.6, right? Now we know that the base is the circle. So circle की circumference का formula क्या होता है? That is 2 pi r, right? So यहाँ पे मैं formula लिख देता हूँ. So 2 pi r,
नाउ इससे जो हम कैलकुलेट करेंगे इसकी सर्कमफ्रेंस वो हमें ऑलरेडी गिवन है, सो मैं इसके इक्वेट कर देता हूं. यू कैन सी दैट इज 17.6 इन मीटर्स, राइट. नाउ जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड इज द रेडियस फ्रॉम इट, राइट. सो अगर हम यहाँ पे इसकी हेल्प से रेडियस फाइंड आउट कर लें, देन हमें पता है कि जो पेंट करना है हमें यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 pi r square. अब इस फॉर्मूले में हमें पहले रेडियस पता होनी चाहिए एंड दैट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फॉर्मूला, दिस इक्वेशन हियर, राइट. सो यहाँ पे इसलिए मैंने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया ताकि मैं रेडियस निकाल सकूं. रेडियस को मैं क्या रख दूंगा इस फॉर्मूले में, विच इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पे ही हमें क्या करना है, इसको पेंट करना है, इस यू कैन सी हेमिस्फेरिकल डोम को, राइट. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट द रेडियस फ्रॉम दिस फॉर्मूला. सो 2 into pi is we know 22/7 into radius हमें फाइंड आउट करनी है. So equal to 17.6 which is the circumference given to us, right. Now you can see यहाँ से 7 जो है डिवाइड से वहां कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में. So you can see on right hand side 7 will be in multiply. Now ये 2 और 22 जो मल्टीप्लाई में वो कहां चले जाएंगे, डिवाइड में. So that will be in the denominator. Now here only r will remain, right, जिसको हमें फाइंड आउट करना है. So let us now solve this. So यहाँ पे पहले मैं डेसिमल रिमूव करता हूँ, एक जीरो आ जाएगी डिनोमिनेटर में. So here you can see I have put a 0 with 22. You can also place it with 2, whatever you like, right? Now हमें इसको solve करना है. So let me just solve it. So यहाँ पे पहले किस टेबल पे reduce करते हैं, you can see on the table of 2. So 2 8 is 16. Remaining 1, so that will make 16. Then 2 8 is 16, right? So यहाँ पे इसको reduce कर दिया at the table of 2. Now further again you can see 22 10 जा 220. So 22 के टेबल में 220 किस पे जाएगा, 10 पे. Then 22 4 जा 88, right. So अब अगर आप ध्यान से देखें तो 7 into 4 क्या होता है आपके पास, 28. डिनोमिनेटर में कितना है आपके पास, 10. So एक जीरो है तो एक डिजिट से पहले क्या लग जाएगी, डेसिमल. So that will be 2.8 meters. So यहाँ पे हमारे पास रेडियस आ गई इस हेमिस्फेरिकल डोम की, that is 2.8 meters, right. Now जैसे कि हमारे पास रेडियस है, now we can calculate the curved surface area जहां पे हमें पेंट करना है. And that can be calculated by 2 pi r square, right. So let us apply the formula. So you can see now the curved surface area of dome, the hemispherical dome, is 2 pi r square. So let me just now substitute the value. So pi is 22/7 into radius हमें पता है यहाँ पे 2.8 square. Square का मतलब 2 times multiply कर देता हूँ. So now decimal removed will give us 10 in the denominator. So यहाँ पे मैं डेसिमल को हटा देता हूँ. 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, right. So यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 छोड़ देने से इजी हो जाता है. So 10 into 10 is 100. Now simply multiply. So 2 into 22 is 44. 44 into 4. Let me just check out. So that will be, you can see 4 4 is 16 plus 1 7 176, right. So 176 into 28. So that will be a calculation here. You can see lengthy one. So 28, right. Now 8 6 ja 48, 8 4 carry, 8 7 ja 56 plus 4 60, 0 6 carry, 8 1 ja 8 and 6 14, right. Then 2 you can see 6 ja 12, 1 carry, 2 7 ja 14 plus 1 15, 1 carry, 2 1 ja 2 and 1 3. So if I just add them, so 2 4 plus 1 9, 3 plus 1 4. So हमारे पास कितना आ गया, 4928. So आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 2 जीरो थी तो 2 डिजिट से पहले क्या लग जाएगी, डेसिमल. So that will be 49.28 meters square, right. Because we know the circumference as well as the radius in meters, so that will be in meters square. The curved surface area, right, that is 49.28 meters square. So हमें यहाँ पे एरिया पता चल गया जहां पे हमें पेंट करना है. Now let us talk about the cost of painting it, right. So यहाँ पे cost निकालनी थी हमें इस क्वेश्चन के अंदर. हमें पता है कि अगर मैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लेता हूं, सपोज दिस इज द 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, तो इसका चार्ज कितना है आपके पास, यू कैन सी दैट इज ₹5. सो यहाँ पे ₹5 चार्ज होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए, राइट. बट हमें यहाँ पे एरिया मीटर स्क्वायर में पता है और कॉस्ट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है. सबसे पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा. लेट मी जस्ट टेल यू, हमें पता है 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करता हूं दोनों साइड, यू कैन सी, सो यहाँ पे मीटर स्क्वायर करता हूं और सेंटीमीटर स्क्वायर करता हूं, सो यहाँ पे 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा. सो जीरोस को डबल कर दीजिए, सो दैट विल बी 10,000, राइट. सो हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द कन्वर्जन रिलेशन, राइट. सो यहाँ पे आपको पता है अगर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है तो इंटू 10,000,
और सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में करना है तो देन डिवाइड इट बाय 10,000, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में। सो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 से। लेट मी जस्ट शो यू हाउ टू एक्चुअली डू दैट, राइट। सो इफ आई जस्ट रब दिस, now you can see cost of painting 100 centimeter square was given to us as ₹5, right? So यहाँ पे सबसे पहले मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाल लेता हूं, तो आप देख सकते हैं 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 into 100। सो अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करता हूं तो कैसे निकलेगा, 100 को कहां भेज दूं, डिवाइड में। सो दैट विल बी 5/100, राइट। अब यहाँ पे आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में। सो मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, जो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, बाय 10,000, राइट। सो मैं इधर क्या लिख देता हूं, 1/10,000 मीटर स्क्वायर, राइट। सो मैंने इस सेंटीमीटर को 10,000 से डिवाइड किया इस वैल्यू को, तो वो किस में हो जाएगी, मीटर स्क्वायर में, राइट। नाउ इक्वल टू 5/100। नाउ ये 10,000 जो है ये डिवाइड से वहां क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। सो व्हाट इट विल बी इज, यू कैन सी 1 मीटर स्क्वायर will be equal to 5/100 into 10,000. Getting my point? So 20 से 20 कैंसिल होगी, 5 into 100 कितना हो गया आपके पास, 500 रुपीज। So आपके पास 1 मीटर स्क्वायर के कितने चार्ज आ गया, 500 rupees. So you can just write it simply the same thing here. So cost of painting, you can see 1 centimeter square is this, then cost of painting, you can see 1/10,000 meter square is this, then cost of painting 1 मीटर स्क्वायर। So आप देख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर में क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई में भेज देता हूं, so that will be 500 rupees. You can see here I have solved it, right? So now you can see if I just rub this and further if I just rub this down too, so you can see the curved surface area was 49.28. Remember that. So the curved surface area of this was 49.28 मीटर स्क्वायर, जो कि पेंट करना है हमें। The curved surface area ये हमने कैलकुलेट किया। अब आप देख सकते हैं मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर स्क्वायर में। नाउ रिमेंबर हमें पता चल गया कि 1 मीटर स्क्वायर अगर इतना सा एरिया है उसका कितना चार्ज लग रहा है हमारे पास, 500 रुपीज, राइट। सो टोटल जो कर्व सरफेस एरिया है, सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग you can say 49.28 meter square area, the curved surface area will be charged as 49.28 into cost of 1 meter square area. So that will be like this, right? So मैंने multiply कर दिया total जो curved surface area था इसका, उसको 500 यानी 1 meter square area के painting के charge से, right? So this will give me the total charge. So if I just remove this, so that will be 100 because decimal के बाद 2 digits थी. Now 2 zeros will cancel out. Now 4928 into 5. So let me just find out. So 4928 into 5. So 5 8s are 40, 0 4 carry, 5 is a 10 and 4 14, 1 carry, 5 9 is 45 and 1 46, 4 carry, then 5 4 is 20 plus 4 24. So 24640. So 24640. So 24,640 rupees will be the cost of painting this hemispherical dome curved surface area, right? So you can see this is all you have to find out in this example here. So that was all in it here.